I will share my screen. Just let me know whether it is visible or not. Visible, right? Yes, ma'am. Okay. So day before yesterday, we saw the elements. Okay. Just give me overview of elements, right? We saw company, company code, storage location, plant, purchase organization, purchase group. So what are the elements of MM and what are the elements of FI? Madam, company and company code are the elements of FI, and plant, storage locations, purchase organization Will and be the elements of elements of M, MM. right? Yeah. Okay. What about the assignments? Central purchasing system is for both plant for procuring material, and decentral is for Decentral is for different. Decentral becomes uh, when plant procure at its own level. Centralized is centralized. From the word we can understand that everything is centralized. And when it Correct. comes to centralized plus decentralization, means some part which are common will be procured at central part, and some part which are common for a different organization, that can be any XYZ elements that are procured at plant level. Correct. So means in short, procurement activities will be centralized, right? Means one team will be there or one purchase organization will be there, which is centrally allocated or located, so that they centralized. can, yes, they can handle the procurement activities of number of plants. Correct? It is correct. Correct. But tell me, for one company code it will be there, or for number of company codes can we do centralized purchasing system? As you said, plant or number of plants, right? It can be it will be for one company code itself. Correct. Okay. Tata Motors can't procure for Tata Steel. Tata Steel can't procure for XYZ other plants. Yes. So that's why one more purchasing system is added on. Okay. So like before 5 to 6 months before. So I have added that one also. I will show you. So before that, tell me decentral one. Like as you told, separate purchase organization will be there for each and every plant for the procurement. But company code is one. Yeah. Correct. Company code will be one. Okay. And third one we saw hybrid. That is the combination of both central and decentral, right? Right. As per your requirement, you can do, no issues. So fourth one is standard purchase organization. So when we are using standard purchase organization, like suppose special type of procurements we are handling, like we can say pipeline and consignment. We saw, right? What is the consignment? What is pipeline, right? That will be come under special procurements. And normal procurement means, suppose normally you are procuring the raw materials, semi-finished material, packaging materials, that will be come under domestic procurement, or you can say normal procurement. Okay. But when it comes to pipeline, consignment process, what is consignment process? You have to store material in your premises. Material is sent to my warehouse, and GR is done for half or the decided. So how much material required, for that only you have to do GR, and for that particular material only you will be the legal owner. I'm responsible. But rest of the, yes, correct. For the rest of the materials which are remain in your company premises or warehouse, the legal owner will be vendor, right? Yeah. Okay, that is the consignment process. And for pipeline, it will be like who said? I think Naneshwar or Girish said on that day that whenever we have to like procure electricity, means we are not procuring like we have to make a PO or PR and we have to buy it, right? It's not like that. So it's come from pipeline, through pipeline, right? That's why it come under pipeline procurement. So this will be kind of a special procurement, right? So whenever it will come and to like special procurement, so you have to set standard purchase organization. Okay, why it is? Because whenever we are going to study further for like we have to take price, right? For that price determination process, we have to take that price from info record. Means it is fetched from that info record. We are going to maintain that info record. In that info record, we have to maintain like which kind of procurement you are doing. Okay, it may be material or any kind of like electricity, okay, oil. So, and also you have to maintain in that info record from which vendor you are going to procure. So that data will be stored in info record. Okay. So from that info record, all the data is fetched, and then you can create a PO and all those things for that one if required. Clear? For handling this special procurement, that's why standard purchase organization is designed. Clear? Any doubt in this?
Ma'am, explain with the example, no? Please. Okay. Suppose consignment we will see. Okay. You have procure what we can say hydraulic cylinder. One example I will give. You have procured that hydraulic cylinder parts. Okay. So that parts you have stored in your company premises. Okay. So, and for normal procurement, you have procuring like suppose hydraulic cylinder one part piston. Okay. So you are procuring that material normal procurement. For that you are creating a PR, then you go for a PO. Okay. But when you are creating a PO for a normal procurement or a normal material, okay, so at that time you are entering a price manually in PO. Okay. But when it comes to special procurement or consignment, you can say consignment or pipeline, so at that time in info record you have to maintain the price. Why? Because you have to make an agreement, right? Contract you have to make to that vendor, you can say. So at that time when you are creating the agreement, you have to take the quotations, right? So whenever you are shortlisting a vendor, you are taking the quotation for on the basis of that quotation, you have to maintain that prices in info record. So from that info record, all the prices, you can say, will get fetched automatically in purchase order. You do not have to enter that prices in PO manually. Whereas in standard, in domestic procurement or normal procurement, you have to enter the prices manually. That's it. Clear? Yes, yes. So prices can change as per the tenure also, right? Yes. So you have to make changes in info record itself. Okay. Okay. So this will be only in standard purchase organization. For example, if I'm implementing a SAP, as per the PO price get automatically captured is what you feed in the system, if I'm Info not record. wrong. Correct. Info record. So that happens when you share a normal PO also. Means you want to say if you no need of standard purchase organization like this, right? Yes, because what means I have seen is that when you create a PO, the price gets automatically captured. The price is what you feed in the system when you get a price list from the vendor. Correct. So in that case, we are not using the standard, and that is not a pipeline or a consignment case. That is a normal procurement case. Either it can be centralized, either it can be decentralized. In that also, the price gets captured directly from the system itself. Yeah. But the thing is, some organization needs a separate standard purchase organization for the special procurements. That's it. If you want to use normal, central or decentral, you can use, no issues. But if you want for separate special procurements, like separate purchase organization should be there, you can implement this one as well, like this. Okay. Depends on you. As I told previous also, that everything like assignment will be depend on the requirement, client's requirement. That's it. Clear? If you want to use central, you can use. If you want to go for decentral, no issues. Okay. Okay, I will take further. So fifth one is reference purchase organization. Okay. As Nitish said that, Saurabh or Nitish said that in central for only one company code we can assign, right? But when it comes to like suppose number of company codes are there, okay, for one company, like for Tata, there will be Tata Motors, Tata Steel, okay. So for them only like oil is required for both plants, for both company codes, right? So we can go for reference purchase organization. That is the solution. So this won't come in pipeline procurement. Yeah, oil won't come in pipeline procurement. Yeah, it will come. It will come. But see, in this standard, it will be for only one company code. Okay. This will be for only one company code. But reference will be for this will be for multiple company codes. That is the difference. Got it. Okay. Or you can say any kind of services you want to take from third party, you can say. So you can take for number of multiple company codes. Only the differences. Okay. So what is these conditions? What are the prices? We are going to see in price determination process. Okay. So just overview we have taken. Okay, see, in this notes I have given that purchase group is element which is not assigned to any other organization element, you can say, in the configuration also. Okay. And
one company code can have many plants, but one plant can have only one company code, right? And third is many purchase organization can be assigned to one plant or one to many. Okay. Then these both 2 points you have to study and you have to answer me properly tomorrow. Because today I have taught you, right? This one, standard and reference. Clear? Yes. Okay. So any doubt, please ask. If no, we can move further for configuration. In this organization structure, if you have any doubt, please let me know. Okay. So see, in this process or organization structure, if interview will ask any question, so he will ask what is the organization structure. Obviously, simple question is there, and you have in that you have to explain what is the organization structure. Okay, then you have to also explain what are the elements in it, and likewise what is the FICO element, finance. Okay, what are the MM, that you have to explain. Assignments also you have to explain. Okay, but which assignment? Company code is assigned to company likewise. But if you ask for like for purchase organization element assignment like purchasing system, so then only you have to give answer for this one. Otherwise, But for assignments. for example, Yes. if I'm giving an interview, for example, you told that interviewer can ask this. I'm giving an interview for MM. So why will he be asking me for FICO? Because you tell that in element he will be asking for FICO also. Yes, because see further we have to see P2P cycle, that is procure to pay cycle. In that invoicing part, little bit we have to do. That's why. Okay, and also you have to cooperate with the FI person as well when you are going to implement, right? So at that time, first configuration will be company and company code, and then only you can start with plant, right? Plant storage location. So that's why you have to give this, define this. But if he asks in between like what is GR and all those things, then you have to say that I didn't handle this one. Okay. So what you will think that you have also carried out this FICO things also, like GR you can say, or GL accounts. Okay. Then FIMM integration we are going to study. In that part also, little bit FICO part is there. In FIMM integration, one topic is there, we have to study that one. Okay. So that's why just overview I have to give that this is the company, okay, which is corporate group, which is in hierarchy, it will be higher level, okay, and then company code, that's it. But when it comes to plant storage location, little bit you have to elaborate it. Okay. Okay, and then separately, if we ask for the assignment of purchase organization or a assignment of a purchasing system, then you have to give these 5 examples, like central, decentral, hybrid, standard, reference. Okay. Okay. So we will move further for the configuration. Okay. Screen is visible, right? This one, S.A.P. Yes, visible. Okay. See. So for this server, have you asked Sriram sir for this server? Yes, everyone. Yes, ma'am. Okay, what is it then? देने वाले हो. Okay, he's going to give. Okay, so just again ask him, or I will ask him that when he's going to give. Okay, so that you can also do configuration side by side. Otherwise, I will do it, and you will be getting again confused in that. So that's why. Okay. How to install, you know, right? Or you can. I will share you the video how to install it, so you can install it properly. Just a minute. I think someone Can you is. share what we need to like download and Yes, which the one version, video is there. I will everything? share with you. Yeah, sure. Okay.
Just give me 2 minutes, okay? Okay. So previously in demo section, we have seen that what are types of screen, right? What are those? 2 types of screen were there. Yes. SAP screen. SAP Easy Access screen. Second one. For implementation guide also is there, right? Implementation guide screen. So for now, we are going to implement, means we are going to configure enterprise structure for a client. So we have to go into SAP implementation guide screen. So do end user have access to that implementation guide screen? No. Only consultant, support consultant, okay? They have access. So for any configuration, first of all, in this task bar, okay, we have to execute one T code is there, that is SPRO. Everything is given in document, which I will share with you now, okay? So every step by step, what are the paths you have to follow? Everything is mentioned in there. And also you can go through this recording as well, okay? Then first is SPRO. Then in this you can see, right? Here SAP reference IMG, that is implementation screen. Again, you have to click on this. So first, what we have to create now? Which configuration we are doing right now? Enterprise structure. Okay. So obviously, you can see over here, there is an enterprise structure. Okay. In this, we have to execute this one, enterprise structure. Again, into that, there is definition, assignment. Okay. So for now, we are going to create, means we are going to define a company. So for that one, you have to click on this definition. Yes. Again, you will say, why it is not our element, it is element of FI, then why we are creating? No need to maintain or create from our side. It will be maintained by FI person, but it is not a critical part. That's why I'm showing you. Or if you don't want to create, I will provide you the company or a company code. And you can create only plant, storage location. Okay. But just I'm showing that how to create a company and company code. Clear? Okay, Saurabh. Okay. Yes, ma'am. So tell me, in this, in definition, there are number of elements are there, like financial accounting, controlling, logistics, sales and distribution, material management. So which one should I select for creation of company and company code? Financial accounting. Finance. Obviously, because it is related to finance. That's FICO. why. Okay? Yes. So in that, first one will be define company. We have to create a company. Okay. So that's why you have to execute into the define company. Okay. This screen will be popped out. So in this above section, you can see number of elements are there. Okay. Over here. So in this new entries, you have to create new. That's why new entries in this. Again, as I said, identification on basis of your requirement, you can give the identification. So you can tell me what kind of identification should I give for company. And also one thing, now company and company code I will create, right? So I will give this company and company code. You can follow this one, everyone. Only plant, storage location, purchase organization, and purchase group. You have to create separately by your own. Clear? So that everyone will create their own. Yes. Okay. Only plant, because each and every plant will be different, right? For everyone. We can have multiple plans. Yes. But only I will create company and company code. Under that company code, you can create number of plants and storage location, purchase organization also. Okay. So if you want to if you want to do practice, you can do, no issues. Why I'm saying, so I will track who have created how many plants under this company code. That's why. Okay.
So, okay, I will only give the company identification. Like suppose APG1, okay, APG1. This is the identification I'm giving, or you can give as per Tata Motors. We will give PM01. I don't know it is created or not. Tata only. Okay. If you want to give any another a name, you can mention in this section name of company too. Then detailed information in this street, okay, postal code, city, PO box, country, obviously. Also one thing, which is the mandatory fields are there now. Automatically, when you are going to enter, screen will or system will show you that is this is the mandatory details you need to fill up. Okay. So country is the mandatory details. So it will be IN for India. For a language key, it will be EN for English. Currency, it will be Indian rupees, INR. This is the short form. Okay. City is not required, but I will put it. Okay. That's it. And just you have to click enter, already exist. Okay. And one more thing. Company and company code, the identification you are giving, it should be 4-digit only. But when it comes to plant, storage location, no issues. 3-digit, 4-digit, 3-digit you should give. 4-digit also you can give. But for company and company code, it should be 4 only. Okay. So maybe that's why it was not accepting it. Okay. So now you can save it. Okay. Minimum 4 digit or 4-digit it should be company and company code. it is Not compulsory? more than that, na? Compulsory. No, not more than that, and not less than Okay. that also. That's why it was not taking it. Okay. So for example, if a company is present in different cities, like you wrote Pune, and it has plant in different cities, so you will be mentioning different cities also, or how? See, one company is there, Tata. Okay. Mm-hmm. Likewise. So one is Pune, one is in Mumbai. Mm-hmm. Okay. So you can mention Pune and you have to create separate company. Again, you have to create separate company. Again, you have to mention Mumbai. Okay. But that remains for Tata Motors only, right? Na? Yeah. Yeah, for Tata Motors only. Okay. I think आप Because confused हो गए थोड़े से. नहीं post that I will be having a question कि फिर वो centralized purchase system में कैसे आएगा अगर मैं दो कंपनी कोड क्रिएट करके रखूंगा तो. हाँ, अभी देखो, अगर आपने टाटा पुणे का किया है और टाटा मुंबई का किया है, ओके, हाँ. 2 किया है, तो सेंट्रल का जब आप करते हो तो आपको रेफरेंस को जाना पड़ेगा. आइदर आप उसी रेफरेंस का जो हमने परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, ओके, for that reference purchase organization you have to assign central purchase organization. Then both, when you are going to assign, then it will be applicable to both for Pune and what we can say for Mumbai as well. So Mumbai guy will be using the Pune code, right? Yes. You're telling this when it comes to centralization. Yes. 1 minute, I will show you in this document also. You mentioned when it comes like for another city. So see, so it comes. So this solution is provided. The reference purchase organization will be assigned to the other purchase organization. Means you can assign to the central. See, I have given this example also. For different location, if it is there, you can do this one also. Clear? जब कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे ना तो और क्लियर होगा. ठीक है. There is an option for choosing reference purchase. Like we are choosing here vendor code or store code. Didn't get. Please repeat it. Means there is an option for clicking reference. Yes, we have to do that. Further we will see. Yeah, okay. Okay, there is options given. Okay. So see. And like you had written short form for India and for English, so it should be in 2 terms, or we will write it full name also. Again, I will show you. Just a minute. See. When you are clicking over here, you can get a window here, right? This window you can see, right? Just on that window, you have to click. Whenever you are going to open it, you can see for different cities. Okay, they have provided. See, like तो ये for ऑटो India, फैच रहता है या फिर मतलब अपने को करना पड़ता है ये? करना पड़ता है. अगर आपको like suppose out of country नहीं, like Canada, SAP का बाय डिफॉल्ट रहता है तो
ये रहता हाँ, है क्या? अगर डिफॉल्ट आप एवेबर से करके लेते हो तो नो इश्यूज, आपको ओके। फिलअप करने की जरूरत नहीं Understand. पड़ेगी. Okay, if your requirement is that yes only for India is there, okay, so make it is default, so every time no need to fill up all these things, right? So just you have to contact with the Ababer, you have to pass on this message, tell him, then he will going to make it as a default. ओके. Okay? This is the practice server, na? That's why I'm telling you. Okay, but in many organizations they have making it as a default. Okay, so for now I'm searching for India. Okay, see, for India it is iron, that's why I put in as the iron. Okay, for language key, again this window is there, you have to open it. For English you have to search it. For English it is en. Okay, whichever language you have to choose. Currency same, Indian rupee or in European, or you want to select, you can select. Okay, that's it, and then see. Clear, Vaibhav? Yeah, understood. Understood. Okay, then save. Just when you are going to save, one request will be pop up, that is the customizing request. Okay, so that is the TR, means transport request. This transport request, one document is there, means one lecture we have to take for that, that will be come in project training. Okay, I will tell you that what is customizing request. Another one request is there, that is related to Ababer, but this request is related to us only. Like suppose this is the customizing request. Okay, why this customizing request is popped up? Why is it so? In reason behind it? आई गेस कल को कुछ चेंजेस करना हुआ तो might be. Yes, और जो डेटा हमने क्रिएट किया है, that will be get into saved into this request. Okay, so how to identify it? So see, over here you can see own request. Exactly to the left it is create request. You have to create request of your own, that you have created this company. Okay, create request, then just you have to give this short description, like organization structure. Just organization structure, keep it, because another elements are also going to come. Okay, organization structure, also main two things you should maintain it, which what kind of configuration you are creating, that you have to maintain. Second one, you have to maintain the date of creation. What is today's date? 7th, right? 07/2020. Okay, again, who is creating, who have created this configuration, that person's name should come. Okay, and then see. Okay, then तो मैम वाई डेट becomes important in this क्योंकि ये तो कहीं दिखेगा नहीं किसी को. yes, but कब क्रिएट किया, ये भी मैटर करता है, कब क्रिएट किया था, उतना ही बस. ओके. ठीक है, अगर देखो दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज क्रिएटेड बाय FI person, right? So he Yeah. has created this company on the date of 7th. Okay, and now when it comes to plant configuration, I will be creating on like 12th or 13th of July. So I will get to know this. Yes, he has created company on 7th of July. That's it. सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी ये होता है तो ये मैंडेटरी रहता है कि मतलब आपको डेट और नाम मैंडेटरी डालना रहता है. है, ये दोनों तो मैंडेटरी है, किसने क्रिएट किया और डेट. ओके. योर नेम एंड डेट, दिस इज मैंडेटरी. मैंडेटरी इन द सेंस ऐसा नहीं बोलेगा कि डालो डालो, ऐसा नहीं बोलेगा. स्क्रीन पॉपअप नहीं करेगी, वैसे एरर नहीं बताएगा. क्यों? नहीं. कैसा है, अगर स्टैंडर्ड एक रखा है उन्होंने, एक फॉलो करते, एक पैटर्न ही बन गया है वो. ओके. ओके. ठीक है, इसलिए ये ऐसा है क्या, जैसे सिस्टम में हमने कोई एक फाइल बनाया है तो फाइल का एक नेम डाल रहे हैं पहचान के लिए. अब ये कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे किसने, नीतीश ने बोला राइट, हाँ. कि कॉन्फ़िगरेशन सेव किया, अगर उसमें कुछ चेंजेस आए, लाइक सपोज मुझे अभी लैंग्वेज की मुझे चेंज करनी है, राइट, मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, लाइक यूरोपियन हुआ, इधर करेंसी मुझे चेंज करनी हो, ओके, कंट्री भी मुझे चेंज करनी हो सकता है, डिपेंड्स. तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरा डेटा सेव हुआ है, उसका एक कोड आया था. अभी पॉपअप नहीं होगा वो, मैं कंपनी क्रिएट करके बताती. जस्ट एक बैक स्पेस एंटर करना है आपको, बाकी जो आपने प्रीवियसली जो डिटेल्स फिल किए ना वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होंगे. ठीक है,
एवरी टाइम आपको ये विंडो में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर सेव, हाँ ये देखो, ये जो डेटा है ना, ये व्यू मेंटेनेंस डेटा, ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा जो आपने वो क्रिएट किया है रिक्वेस्ट, और यू कैन गो फॉर दिस वन, दिस इज एक्सेप्टेबल बाय एबेवर। ठीक है, मतलब अगर अगर आपने एबेवर को बोला कि ये जो रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट की थी उसमें से थोड़े से माइनर चेंजेस करने हैं, तो उसके साथ साइड से भी आपको एक एक्सेस देना पड़ता है उसे। सो ये रिक्वेस्ट नंबर आपको उसको देना पड़ता है, ये वाला। ओके। ठीक है? अगर ये भी आपको नहीं याद हो, अगर कुछ उसका डेटा नहीं है, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर दिस व्यू मेंटेनेंस डेटा। ये दोनों में से कोई भी चलेगा, बट प्रेफरेबल पहले तो यही रखना है। ठीक है, ठीक है, देन कंटिन्यू। मतलब जो कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करोगे वो इसी में सेव होगा। ओके, अभी कौन कौन लिफ्ट हुआ है? बट अभी कंपनी का जैसे आपने कहा कंपनी कोड 4 डिजिट का ही होना चाहिए, वहाँ तो 5 डिजिट थे। कहाँ पे? वो TMP TMP 0। 01 आपने बनाया ना? यस, हाँ, अगर आप न्यूमेरिक फॉर्म में डाल रहे होंगे तो 4 का ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लाइक अभी मैंने इनिशियल क्या दिया है, TMP01, राइट? हम्म। तो वो दोनों न्यूमेरिक भी अल्फा न्यूमेरिक है ना, राइट? मतलब ओके। क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लेन नहीं करते आ रहा है मुझे, मैं बताती हूँ। हाइब्रिड बोल देते हैं। हाँ, वही कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो वैसे करोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। बट ओके, अगर आप तो फिर ये कंपनी कितना वगैरह, डिजिट तक एक्सेप्टेबल है? कौन सा कंपनी का? जिसमें आप अल्फाबेट और नंबर्स दोनों को यूज करते हो, जैसे आपने बोला सिर्फ मोस्टली अगर मैं 5 नंबर यूज। एक्सेप्टेबल है, मोस्टली 5। मैंने 5 के ऊपर कभी डाला भी नहीं है। ओके। ठीक है, जहां और पे भी ऐसे स्टैंडर्ड कितना रहता है, मीन्स जैसे आप काम करते हो तो वो अगर पूछ रहा आप न्यूमेरिक फॉर्म में अगर डाल रहे होगे ना, कंपनी हूँ। का ना मोस्टली न्यूमेरिक फॉर्म में ही डालते हैं। ठीक है, ओके। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में डालते हो तो स्टैंडर्ड वाइज आप 4 ही रखो। ठीक है, अभी जहां कहाँ पे भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है ना, मतलब 2 जगह पे मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन की है, तो उसका मैंने 1000 ही रखा हुआ था। मतलब जो FI का पर्सन था उन्होंने, मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है उससे कि यस 1000। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल देते वक्त भी 1000 ही प्रेफर किया है। जी। ओके, अभी, हाँ, अभी डिफाइन किया हमने कंपनी, दैट वी हैव क्रिएटेड अ कंपनी फ्रेश, बरोबर। देन अभी उसके बाद क्या आएगा, कंपनी के बाद कंपनी कोड। ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली थर्ड इसमें दिखेगा आपको, एडिट कंपनी डिलीट चेक कंपनी कोड। ओके, इस पे एग्जीक्यूट करना है आपको। अभी यहाँ पे आपको फ्रेशली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कंपनी कोड। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्या रीजन हो सकता है? अभी क्रिएट किया ना कंपनी कोड? नहीं नहीं, कंपनी क्रिएट किया हमने। कंपनी क्रिएट की। हम्म। और एक एक्सेल शीट में ना वो मेंटेन करते जाओ, जैसे मैंने बोला ना KDS आपको, जैसे मेंटेन करते जाओ। जैसे मैंने अभी कंपनी क्रिएट किया, लाइक TMM01, राइट? जी। तो वो कंपनी था मेरा, वो मैंने नोट डाउन किया। मतलब आप एक्सेल शीट में उसको नोट डाउन करो, लाइक आपका KDS। ठीक है, वो प्रेफर करना है आपको। देन अभी कंपनी कोड, यस, कंपनी कोड क्यों कॉपी करना पड़ेगा? फ्रेशली न्यू क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? कर भी सकते, पर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इन शॉर्ट, जो भी कोई कॉन्फ़िगरेशंस होंगे बैकएंड में, ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशंस बार बार आपको करने नहीं पड़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस, जब भी ये SAP जब क्रिएट हुआ था ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तब भी उन्होंने उसके साथ एक कंपनी कोड वो स्टैंडर्ड क्रिएट करके दिया। ठीक है, और नहीं दिए होंगे तो आपको क्रिएट करना पड़ता है स्टैंडर्ड। आप भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये प्रिंसिपल कंसल्टेंट को ही एक्सेस है इसका स्टैंडर्ड क्रिएट करने का। ठीक है, अब जस्ट कंसिडर करो, मैंने कॉपी डिलीट जो है उस पर एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे फिर से आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। उस पे जो यहाँ पे कॉपी है, कॉपी और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट दिख रहा है आपको, न्यूली फ्रेश, देखो यहाँ यहाँ पे यहाँ यहाँ कॉपी तो है, नहीं देख। नहीं है, बड़ी रिप्लेस कर। स्पीड में आ गए हो मैडम इस स्क्रीन पे, थोड़ा पीछे आके फिर से आना ना। देखो पहले तो डिफाइन किया, राइट? उसके बाद जो जी। थर्ड नंबर है, एडिट कॉपी थर्ड पे डिलीट हाँ, कॉपी चेक स्क्रीन कोड कंपनी आया। कोड, ठीक है, जी। पे एग्जीक्यूट करना है। हाँ। उसके बाद कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, उस पर डबल क्लिक। ओके। देन यहाँ पे कॉपी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट नहीं है। ये देखो नीचे यहाँ पे दिख रहा है 70% टेबल्स ऐसे शो कर रहा था। ठीक है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, फिर से एक बार देख लो। तो यहाँ पे सिस्टम क्या पूछ रही है,
that from which company code to which company code, right? From and to. From means standard company code आपको डालना है जो क्रिएट किया हुआ है प्रिंसिपल कंसल्टेंट ने पहले। EMP01 दैट इज जो हमने क्रिएट किया वो कंपनी है, ओके पहले कंपनी क्रिएट की है जी जी फ्रेश से, राइट? अभी ये कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड कंपनी कोड है मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये क्या मुझे प्रिंसिपल जो कंसल्टेंट है वो हाँ, बताएगा कि ये वो तो बताएगा वर्किंग आपको ये टी कोड, मतलब सॉरी, ये जो कंपनी कोड उनके स्टैंडर्ड है पहले अवेलेबल, उन्होंने क्रिएट किया, तो आपको वो डेटा प्रोवाइड करेंगे। TDS ठीक है ओके, तो मैंने जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया है दैट इज AS01। ओके, ये मैं आपको दूंगी स्टैंडर्ड, जो कि उससे आप नया जो आपको कंपनी कोड क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, मैंने कंपनी क्रिएट किया था TMM01, राइट? तो मैं अभी हम्म। कंपनी कोड कौन सा क्रिएट करूँ, वो तो मतलब क्रिएटेड है आपको ऑलरेडी। आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपरली आपको, कंपनी क्रिएटेड है ना कोड थोड़ी। हाँ अभी कंपनी कोड क्रिएट करना है ना मुझे। ओके। हाँ लाइक टाटा क्रिएट किया मैंने, जी अब मुझे टाटा मोटर्स क्रिएट करना है। बट ठीक है, आपके पास तो है ना रेंज, तो फिर क्यों क्रिएट कर रहे हो अलग हाँ से? तो मैं स्टैंडर्ड, ये फ्रॉम में से क्या लिया मैंने, स्टैंडर्ड लिया एक है, राइट? हाँ ये अभी क्रिएट किया था कि AS01, नहीं ये मैंने नहीं पहले create करके रखा, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड। ओके, अभी जो आपको खुद का नया क्रिएट करना है फॉर क्लाइंट, हाँ मीन्स टाटा मोटर्स क्रिएट करना है मुझे अभी, तो मैं अभी आइडेंटिफिकेशन TMM02 रखूंगी। यहाँ पे नेक्स्ट 02। ओके, यहाँ पे कंपनी कोड के लिए अगर आप दोनों कंबाइन ले रहे हो, लाइक अल्फा न्यूमेरिक, ओके, तो आपको 4 डिजिट ही चाहिए यहाँ पे कंपनी कोड के लिए। आप न्यूमेरिक लो या फिर डीजी, जैसे आप डिजिटल फॉर्म में जैसा आपको लेना है वैसा। ठीक है, हाँ अभी यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या शो करी, देखो डाटा ऑलरेडी एग्जिट कंपनी को TM02 टू द ऑर्ग ऑब्जेक्ट, मीन्स आपको जो AS01 जे है उससे आपको कॉपी करना है वो डेटा जो बैकएंड में डेटा है। बैकएंड में डेटा इन द सेंस क्या कॉपी कर रहे हैं वो भी बताती हूँ। ओके, देखो GL अकाउंट, जो उसके बैकएंड में अकाउंटिंग का वगैरह डेटा है वो आपको न्यूली फ्रेशली आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कॉपी होगा वो स्टैंडर्ड कंपनी कोड से। समझा? जस्ट आपको येस करना है। देखो अभी क्या कॉपी कर रहा है, पहले तो GL अकाउंट किया, उसके बाद में क्या किया, लोकल करेंसी, करेंसी कॉपी कर रहा है। जब हमने कंपनी क्रिएट किया था तब हमने क्या क्या डेटा प्रोवाइड किया था उसमें, करेंसी लैंग्वेज। ओके, सब मैन्युअली डाला था, राइट? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सब बैकएंड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड से आ रहा है जो हमने फॉर्म में डाला है, जस्ट वो कॉपी हो रहा है। अगेन यस, फिर से एक बार डालो अगर सिस्टम पूछती है तो। अकाउंटिंग बट GL कैसे कॉपी किया? GL तो अपन ने बनाया नहीं था। स्टैंडर्ड में है ना, स्टैंडर्ड कॉपी कर रही हूँ ना मैं, स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मैंने बनाया है। ओके, और जैसे कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मेरे लिए पूरा कंपनी नया है, तो उस केस में तो GL मेरे को नया बनाना पड़ेगा फिर। यस, फिर वही प्रिंसिपल, आपका जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट रहेगा ना वो वो बनाएगा बनाएगा वो। ओके। हाँ, तो आपको समझे उससे वो ठीक है। लेना है कि स्टैंडर्ड कौन सा है। ठीक है, बस अपने को यूज करना हाँ ठीक है हाँ समझ। अभी एक कंसिडर करो, आगे नहीं रिक्वेस्ट पॉप हो गई, देखो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, कौन से इसमें डेटा सेव हो रहा है मेरा, यही जो मैंने क्रिएट किया था, राइट? जी यहाँ पे ओके, देन अगेन कंटिन्यू। देखो नीचे दिख रहा है यहाँ पे टेबल्स कॉपीड इन हाँ डेटाबेस। हाँ हाँ हाँ। आई थिंक ये जो टी कोड है ऑलरेडी है वहां पे। अगर ऑलरेडी होगा ना तो वो आपको एरर मैसेज थ्रू करता है, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, हाँ हो गया। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या है, कंपनी कोड AS01 कंप्लीटेड टू TM02, राइट? ये हमारा कंपनी कोड है, मतलब पूरा जो डेटा था, लाइक नंबर रेंजेस वो भी हम स्टडी करने वाले हैं, नंबर रेंजेस क्या है, GL अकाउंट्स,
ओके, देन करेंसी, ठीक है। जो जो AS01 में जो मैंने डाला था, मतलब हमने क्रिएट किया था एज अ स्टैंडर्ड, वो पूरा कॉपी हुआ है TM02 में, ठीक है। आपको जस्ट, आपने क्या डाला, जस्ट फ्रॉम डाला, मतलब स्टैंडर्ड कौन सा था और आपको कौन सा क्रिएट करना है वही डाला, बराबर। उसके बाद आपने कुछ करेंसी वगैरह डाली क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, सारा सिंक किया। राइट, मतलब पूरा फेच हो रहा है स्टैंडर्ड कंपनी से, कंपनी कोड से, राइट। जस्ट आपको एंटर एंटर करना है, देन कंटिन्यू, ओके। ऐसा स्क्रीन पॉपअप हुआ कि देन यू हैव टू गो बैक, बस सेव हो गया ये। अभी जहाँ पे ये सेव हुआ है, अगर मुझे चेक करना हो तो वो हम्म, कहाँ से दिखेगा? हाँ, देन ये जो सेकंड है, एडिट कंपनी कोड डेटा, ओके, इस पे क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करके यहाँ पे पोजीशन है, देखो नीचे, मेरा कर्सर कर्सर विजिबल है ना? हाँ, हाँ, विजिबल है। देखो ये पोजीशन पे आपको क्लिक करना है। देन आप कंपनी कोड अभी कौन सा डालोगे, जो आपको देखना है, आपने क्रिएट तो किया है। मैंने बनाया है TM हाँ, TM 02 01 EM02, 02। ओके, एंड एंटर, मुंबई ओके। देन भर्ती ये में देखो, यहाँ पे देखो क्या आया है, आई टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आ गया। हाँ, यहाँ पे तो बहुत क्रिएट किए हुए लग रहे हो। सबने एग्जांपल आई थिंक यही लिया, ओके ओके। PVT LTD अपन ने लिया शायद। हम्म, नहीं नहीं, मैंने तो डाला नहीं था वो जो हम जब क्रिएट करते ना, बस मैक्स टू मैक्स 4 बार आपको स्क्रीन पॉपअप होती है। आप भी तो बहुत बार हुई ना, 5-6 हाँ, बार हुई, हम्म, राइट। ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट है, एक मिनट। इसीलिए सारा और का ये कॉपी जो करना है ना पड़ा। टाटा मोटर्स, ये नहीं, मैंने जो स्टैंडर्ड कंपनी को नेम दिया है ना मैंने, वो ये नहीं है, वो डिफरेंट है। Just एक मिनट, फिर से मैं एक बार करके दिखाती हूँ। वो पुराना कोड से आप डायरेक्टली जा सकते हो ना, क्या क्रिएट किया था? किया था, बट वो जो TM02 था ना, AS01 बोल रहे हो क्या, स्टैंडर्ड वाला? नहीं, आपने बोला था ना कि जैसे एबाबर को आपको एक कोड देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो जा सकता है। हम्म, तो वो कोड आप डाल के नहीं देख सकते हो कि क्या क्रिएट किया है पीछे जाके? मैं भी वही वो चीज पूछ एक्सेस, रहा था। हम्म। एक्सेस उसे ही रहता है। ओके। देखो 3, ये देखो इन्फॉर्मेशन जब आता है ना, सर्टन डेटा नॉट कॉपीड, मींस वो प्रीवियसली वाला ही ले रहा है। ये देखो, देयर आर इनकंसिस्टेंसी इन लीजर दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग पार्ट, ओके। इसमें कॉन्फ़िगरेशंस में बता रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सर्वर है ना, कोई भी कुछ भी डाल देता है ना, इसलिए डेटाबेस में कॉपी हो रहा है सब जो डेटा है ना, okay। फिर से सेम इससे होगा। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, तो वो बहुत लेंदी होता है।